क्वेश्चन 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस एक्ट एज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर किडनी कॉर्टेक्स मेडुला या लूप ऑफ हैनले करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा लूप ऑफ हैनले क्वेश्चन 37 है दोज नेफ्रॉन्स विच आर प्रेजेंट अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला आर कॉल्ड juxtamedullary nephrons, cortical nephrons, internal nephrons या outer nephrons. Correct option is alpha, juxtamedullary nephron. Question 38 है when water is in short supply, increased water retention occur through the cortical nephrons, proximal convoluted tubules, juxtamedullary nephrons या tissue of cortex. Correct option is Charlie, juxtamedullary nephron. Question 39 है ascending loop of Henle does not allow outflow of sodium ions, potassium ions, chloride ions या water. Correct option is delta water. Question 40 है water and sodium ions are reabsorbed in alpha urinary bladder and urethra, beta ureter, Charlie adrenal cortex or delta proximal convoluted tubule and collecting duct. Correct option is delta proximal convoluted tubule and collecting duct. Question 41 है women's capsule continues as extensively convoluted portion known as peritubular capillaries, proximal convoluted tubules, efferent arterioles या afferent arterioles. Correct option is beta proximal convoluted tubules. Question 42 है select the part of nephron which is not permeable to water and stops its outflow. Glomerulus, proximal tubule, ascending loop या descending loop. Correct option is Charlie ascending loop. Question 43 है the main factor in producing hypertonic urine is alpha glomerulus, beta influence of aldosterone, Charlie gradual increase in osmolarity from cortex to inner medulla or delta ADH influence on collecting duct. Correct option is Charlie gradual increase in osmolarity from cortex to inner medulla. Question 44 है what is the least selective process during urine formation? Reabsorption, pressure filtration, secretion या differential permeability. Correct option is beta pressure filtration. Question 45 है the filtration is completed the waste products through distal tubules of nephron empties to alpha proximal tubules, beta efferent arterioles, Charlie peritubular capillaries or delta collecting tubules. Correct option is delta collecting tubules. Question 46 है the capillaries of glomerulus rejoin to form an collecting duct, peritubular capillaries, afferent arterioles या efferent arterioles. Correct option is delta efferent arterioles. Question 47 है given below is the diagram of nephron without vascular supply. तो वस्कुलर सप्लाई के बगैर ब्लड वेसल्स के बगैर आपको नेफ्रॉन का डायग्राम नीचे नज़र आ रहा है उसमें ए बी सी और डी पार्ट्स उसने हाईलाइट कर दिए और पूछ क्या रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट सी। तो यहाँ पे ये जो पार्ट उसने मेंशन किया है इसके बारे में पूछ रहा है कि इसको क्या कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल या लूप ऑफ हैनले। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चार्ली होगी, डिस्टल ट्यूब्यूल इसको कहा जाता है। क्वेश्चन 48 है अल्डोस्टेरोन प्ले रोल इन अल्फा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बीटा ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम आइंस इनटू किडनी, चार्ली अपटेक ऑफ सोडियम इन द लूप ऑफ हैनले और डेल्टा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली अपटेक ऑफ सोडियम इन द लूप ऑफ हैनले। क्वेश्चन 49 है ADH इफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर अल्फा walls of collecting ducts, beta walls of loop of Henle, Charlie glomerulus or delta proximal convoluted tubules. Correct option is alpha walls of collecting ducts. Question 50 है antidiuretic hormone helps in reabsorption of water by changing permeability of proximal tubule, distal tubule, collecting tubule या loop of Henle. Correct option is Charlie collecting tubule. Question 51 है aldosterone help in conservation or active absorption of sodium, calcium, potassium या bicarbonate ions. Correct option is alpha sodium. Question 52 है which portion of nephron is under the control of ADH? Alpha Bowman's capsule, beta ascending arm, Charlie distal and collecting duct or delta descending arm. Correct option is Charlie distal and collecting ducts.
क्वेश्चन 53 है एंटीडायूरेटिक हार्मोन इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अमाइनो एसिड्स, साल्ट्स या अमोनिया। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, वाटर। क्वेश्चन 54 है एक्टिव अपटेक ऑफ डैश इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लूप ऑफ हैनले इज प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरॉन, पोटाशियम आइंस, सोडियम आइंस, क्लोराइड आइंस या कैल्शियम आइंस। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, सोडियम आइंस। क्वेश्चन 55 है एंटीडायूरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम अंटीरियर पिट्यूटरी लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, hypothalamus या थैलेमस। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। क्वेश्चन 56 है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन डायबिटीज इन स्पाइडस, दिस डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंटीडायूरेटिक हार्मोन, अल्डोस्टेरॉन, थायरोक्सिन या कॉर्टिसोल। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, एंटीडायूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन 57 है द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आइंस इन द बॉडी फ्लूइड्स इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन रेनिन, अल्डोस्टेरॉन, एंजियोटेंसिन या सीपीके। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, अल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन 58 है अ हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब एक्ट टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट in collecting tubule back to kidney is known as renin, antidiuretic hormone, angiotensin या growth factor। correct option is beta, antidiuretic hormone। question 59 है when water content in body become high what will happen? alpha, ADH release will be inhibited, beta, ADH will be released in large amount, charlie, aldosterone will be released, or delta, anterior pituitary will produce ADH। correct option is alpha, ADH release will be inhibited। Question 60 है technique used for non-surgical removal of kidney stone is called ultrasound, lithotripsy, dialysis या x-rays। Correct option is beta, lithotripsy। Question 61 है during peritoneal dialysis the dialysis fluid is introduced into which part of human body? liver, abdomen, kidney या pancreas। Correct option is beta, abdomen।